जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कम करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ावा देना होगा, जो कि सोलर एनर्जी में, वाइंड एनर्जी में, जियोथर्मल एनर्जी में, हाइड्रो पावर एनर्जी में चल रहे हैं, ओशन एनर्जी, बायो एनर्जी में चल रहे हैं, उसी तरह के इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना होगा। और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे चलते हैं, जैसे कोयला हुआ, कोल हुआ, ऑयल हुआ, नेचुरल ऑयल हुआ, तो उनको प्रमोट नहीं करना है। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आल्सो, सस्टेनेबल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, उसी तरह की इकोनॉमी, इस तरह की फाइनेंस करेंगे जिसमें हम उसको ग्रीन फाइनेंस बताते हैं। ग्रीन फाइनेंस क्या है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज दैट सपोर्ट द एनवायरमेंट। सो हम इसी तरह के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, सोसाइटल फ्रेंडली होगा। So investing at the role of financial markets is supporting sustainability. Okay. Then sustainable development goals को ensure कर रहा होगा. There are 17 sustainable development. One is goal number 4 is ensuring quality education, and the other 16 will have to ensure in our practices in the form of reducing poverty, health, education, clean energy, responsible consumption, ensuring peace. ये सारे करना होगा. Then global partnerships, international collaboration, cooperation, multi-stakeholder partnerships, एक कंट्री दूसरे कंट्री मिलके कॉमन प्रोजेक्ट्स करना, ये सारा ethical decision making. कोई डिसीजन अगर हम ले रहे हैं तो that has to be highly ethical on the matter. Okay, so students should learn to make decisions considering long-term environmental, social, and economic implications rather than focusing on short-term profits. So we'll have to forego the short-term profits and conveniences. We'll have to see a long-term benefit of the acts that we do. Intergenerational responsibility. Intergenerational. So the responsibility is not for only the present generation, but the future generations as well. We should have a system thinking. So in order to develop a system, a holistic view of different systems, जो कि interact करे, एक दूसरे के साथ काम करे. When we think of society, we'll also think of economy, we'll also think of environment. When we think of economy, we'll also think of society and also the environment. So there has to be a holistic approach in our study, teaching and learning, because they are all interconnected. Then complex problem solving. So we will have to learn problem solving skills and approaches that account for the complexity and interdependence of the global sustainability issues. So इस तरह की problems को कैसे solve किया जाए, those skills also we should have to learn. Policies and advocacy करना है, advocacy करना है. बहुत सारे लोगों ने आपने देखे होंगे कि they are advocating, animal lovers, and there are many people, they actually working for some aspect of the sustainable practices. So इसी तरह का हमको advocacy लेना है, activism करना है in different sectors. Okay. Many people are also working for justice and good governance. आपने सुना होगा बहुत सारे लोग RTI एक्टिविस्ट्स हैं. अगर कहीं पे कुछ करप्शन हो रहा है तो they take the information on RTI and then they bring it to the limelight. Okay, so thereby they are trying to reduce the corrupt practices in our society and to establish the good governance. Okay, so advocacy and activism is चाहिए at individual level पे. And then sustainable development, policy development. So so different policy issues at different levels like local, national, and international levels may set होना है so that it can drive the sustainability efforts, and technology and innovations. So you have to innovate such technologies which are based on renewable energy, which are ensuring clean water technologies, sustainable agriculture, carbon capture mechanism, जिसमें
कम कार्बन एमिशन होगा, इस तरह की टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करना चाहिए, एंड दैट आर की टू एड्रेसिंग सस्टेनेबल चैलेंजेस। डिजिटल लिटरेसी, हमको ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लिटरेट होना पड़ेगा, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के लिए दिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज द फिजिकल एक्टिविटीज एक्चुअली इफ यू कन्वर्ट इनटू ए से फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि बैंक पहले तो लोग बैंक में जाते थे और दे वर मेकिंग ए क्यू, गिविंग ऑल देयर टाइम, दे वर स्पेंडिंग देयर, and then they were withdrawing their money. Now you have the ATM counters, you have uh, online payment options are there, UPI is there, so you can transfer the money conveniently without going anywhere. If you are going to the bank, then you are taking a bike, you are burning the petrol, and it creates carbon dioxide and other greenhouse gases. So that has reduced. So likewise, lot of human activities जो कि हम कार्बन फुटप्रिंट बताते हैं, तो इसी तरह का अगर डिजिटल लिटरेसी को हम लोग फॉलो करते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट बहुत सिग्निफिकेंट लेवल तक कम हो जाएगा। देन ग्लोबल सिटीजनशिप, हम सबको सोचना चाहिए कि हम बस यही जिले का या यही स्टेट का या ये कंट्री का नहीं है, बट ओवरऑल वी शुड हैव a global perspective. We'll have to think of the problems, global perspectives and their solutions for that. Okay, so climate change, poverty and inequality, हमें हमारा यहाँ पे सब कुछ ठीक है बता देने से नहीं होगा. If there that is happening elsewhere in the world, then also we'll have to be conscious about that. We'll have to responsibly play, because किसी जगह पे आज हो रहा है, तो जैसे कि जैसे जंगल फायर होता है ना, एक जगह पे होता है और कुछ देर देखते देखते दूसरी जगह पे भी चला जाता है. सो इसी तरह की एक प्रॉब्लम जहां शुरू होता है तो हमारे प्रॉब्लम नहीं है इनिशियली, बट देन आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड द सेम प्रॉब्लम इज worrying us and we are suffering from the same problem at some time. So इसलिए ग्लोबल challenges को लेने के लिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, कल्चरल सेंसिटिविटी एंड कोलैबोरेशन. Okay, so the cultural practices, indigenous practices, will have to preserve them. जैसे कि हम पहले जानते थे लोग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे फॉर देयर हीलिंग ऑफ देयर डिजीजेस एंड प्रिवेंटिंग सम ऑफ द डिजीजेस. सो वो सब इंडिजिनस नॉलेज है. सो इंडिजिनस नॉलेज को हमको प्रिजर्व करना है. वो क्योंकि इंडिजिनस जितने सारे हैं वो सारे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं. उसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, उसमें बहुत ज्यादा अदर थिंग्स का लॉसेस नहीं होते हैं. तो इसलिए हम वो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को, इंडिजिनस कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए. ओके, एंड सस्टेनेबल एजुकेशन में लाइफ लॉन्ग लर्निंग का बहुत ज्यादा रोल है. इट इज नॉट ओनली वी लर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम खाली स्कूल कॉलेजेस में जानेंगे, बट इट शुड बी ए प्रैक्टिस ऑफ in the in the lifelong learning process. Okay, and we should have an interdisciplinary approach, क्योंकि एक सब्जेक्ट नॉलेज लेके कोई एक बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करना संभव पर नहीं है. इसलिए बहुत सारा सब्जेक्ट का ज्ञान इकट्ठा करके इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करके, इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज करके वो हम उसको वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में बायोलॉजिकल साइंसेस करके वो हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करके वी आर मेकिंग द होल प्रैक्टिसेस more sustainable. Then experiential learning by doing it, learn by doing it, hands-on projects, internships, sustainable focused organizations, and then critical thinking and problem solving. This has to be a part of, these are some of the areas where even students like you can also do research. Research areas on sustainable development, environmental sustainability पे जैसे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बारे में कर सकते हैं,
क्या इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का एक जगह पे, एक डिस्ट्रिक्ट पे, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, उसका बेनिफिट्स और पिटफॉल्स क्या है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट जैसे कि एक बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, किसी जगह पे कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, इस तरह की हम बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं एंड देन उसका आउटकम भी वो फर्दर रिसर्च को हेल्प करेगा। एंड दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट बेस्ट प्रैक्टिसेस। एनईपी 2020 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत गुरुत्व दिया गया है। इसे बताया गया है कि the whole national education policy is aligned with the Sustainable Development Goal of the United Nations, okay, which aims to provide quality education for all. Goal number 4 में जैसा है. So NEP 2020 is India's first education policy of 21st century, which aims to create new education system with a focus on this sustainable development. Okay, so इसका जो मतलब application areas हैं, providing quality education, ensuring equal access to all, promoting sustainable development and encouraging innovation and research, promoting global citizenship, ये सारा इसमें भी है, जो कि हमने देखा कि sustainable development का ये principles है. These principles are also there in the NEP 2020. Okay, and this is a document where you can find more details on the education for sustainable development roadmap. ये 2020 का यूनेस्को का डॉक्यूमेंट है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिकेशन है. ओके, सो व्हाट 2030 का रोड मैप है टू अचीव, बिकॉज जो जो गोल था एसडीजी गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, देर एक्चुअली प्रपोज टू बी अचीव बाय 2030. सो इसलिए हाउ एजुकेशन कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम एंड ये हेल्प करेगा टू अचीव द sustainable development goal. ये document में है. This document is freely available on the internet. You can read and you can get a lot of other information. So with this, thank you so much. आपको अगर कुछ query चाहिए, कुछ query है या कुछ है तो I'll be happy to give you. स्टूडेंट्स आप लोग अनम्यूट करके सर से क्वेश्चन कर सकते हैं.